troubles and their difficulties. परमेश्वर उनके सारे दुखों और कष्टों में साथ रहा. And there was one reason, despite their murmurings, despite their difficulties, despite the trouble they gave to the Lord continued to be with them. There is a very important reason for that. और इन सब चीजों के पीछे एक ही कारण है. इसके बावजूद उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया, उसको तकलीफ दी, उसको बोला और परखा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को उनके साथ बनाए रखा. उसके पीछे एक कारण है. And the reason that I could see was they were a people who were willing to go on unto the goal that God has set before them. क्योंकि वो एक ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि वो जो लक्ष्य उनके सामने रखा है उसकी तरफ निरंतर बढ़ते जाएं. Listen very carefully. और ध्यान से सुने. Despite their weakness, their struggles, the troubles that they gave to God, God was willing to be with them and help them because they had a heart to move on in God. उनकी स्वयं की कमियों और घटियों और दुर्बलताओं के बावजूद और वो सारे कष्ट और बुड़बुड़ाहट जो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बोली, इन सब चीजों के बावजूद भी परमेश्वर उनके साथ रहा, क्योंकि उनके स्वयं के जीवन के अंदर हृदय के ऊपर एक इच्छा थी कि वो आगे बढ़ते जाएं. There are times when we look at their life, their journeyings, they had to stop in certain places. There were delays there, but they moved on again. और इस यात्रा के ऊपर जब हम मन करते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार परमेश्वर की तरफ से कई चीजों के अंदर विलंब हुआ वहां पर, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो बढ़ते चले गए. So the Lord was with them because they had a heart to go on to that land unto which God has promised them. क्योंकि उनके अंदर एक हृदय था आगे बढ़ने का, इस कारण से परमेश्वर उनके साथ रहा और उनकी सहायता करी कि वो वाचा वाले देश की तरफ बढ़ते जाएं. So when they went on, the Lord also went on with them.
और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले गए, परमेश्वर भी उनके साथ आगे बढ़ता चला गया। Because they went on, God went on with them. क्योंकि वो आगे बढ़ते चले गए, इसलिए परमेश्वर भी आगे बढ़ता चला गया। The Lord went with them. परमेश्वर उनके साथ साथ चलता When they गया। went on with the Lord, was willing to, forgive them, help them, and take them on into that purpose. और हम देखते हैं कि जब वो परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले गए तो परमेश्वर ने भी उनकी सारी कमियों को, सारी गलतियों को क्षमा करता चला गया। And saints, that's very important in our lives. और ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। When we have a heart to go on with the Lord unto that ultimate purpose unto which we have been called, the Lord will be with us. और जब हमारे अंदर उस अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए हृदय होगा, तब हम पाएंगे कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हमारे साथ होगा। And this is one of the fundamental principles or terms upon which the Lord shall be presenting himself with his people. और ये एक आधारभूत सिद्धांत है जिसके अनुसार परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में बनाए रखेगा। So we see that when Israel began, they began with a heart to obey the Lord and walk in his precepts. और हम देखते हैं जब इस्राएल ने शुरुआत करी तो उसने इस हृदय से शुरुआत करी कि वो परमेश्वर की सारी विधियों और नियमों का पालन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। For the Lord has set a land before you, and that was a vision they had, and they began from Egypt. परमेश्वर ने उन्हें एक वाचा का देश दिया था और उस देश उनके लिए एक दर्शन था और उसके लिए वो बढ़ते गए। Then they came to the Red Sea. तब वो लाल सागर के पास आए। And the Lord did a tremendous work there. और परमेश्वर ने अद्भुत कार्य करा वहाँ पर। And the armies of Pharaoh, they were drowned in the sea. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से मिस्र की सारी सेनाएं उस समुद्र के अंदर डूब के। And they sang a song unto the Lord and blessed the Lord. और तब हम देखते हैं इस्राएल ने परमेश्वर के लिए एक गीत गाया और And they said, the Lord has brought us out to bring us in. क्योंकि और उन्होंने गाया कि परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है अंदर ले जाने के लिए। The Lord has brought us out. परमेश्वर ने हमें मुक्त करा, निकाला। And he did not let us die there in the sea. और परमेश्वर ने समुद्र में मरने के लिए हमें नहीं छोड़ा। And the Lord is with us. और परमेश्वर हमारे साथ है। The Lord has brought us out. परमेश्वर ने हमें मुक्त कराया और निकाला है बाहर। To take us into the land that which he has promised to us और उस and to our fathers. उस वाचा के देश की तरफ परमेश्वर हमें लेके जाएगा जिसका वायदा उसने हमारे पूर्वजों से करा। So we see that they started with a tremendous vision of the land and God's purpose. और हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी अद्भुत शुरुआत करी उस वाचा के देश के ऊपर नजर रखते हुए। So they started so well. They had a sense of purpose and a vision of the land that God has placed before them. और हम देखते हैं कि कितनी अच्छी शुरुआत उन्होंने करी और उनके जीवन के अंदर उस दर्शन के प्रति एक एहसास था और उसके लिए उन्होंने अपने आप को दिया। So we see that despite the struggles, the difficulties, sometimes the unbelief, we see that Israel moved on. God's presence was with them to take them on. और हम देखते हैं कि सारे संघर्ष, दुख और कष्टों के बावजूद भी इस्राएल लगातार आगे बढ़ता चला गया। They could have the tremendous victory. The first victory was at the Red Sea in their lives. और हम देखते हैं कि उन्होंने कैसी विजय को प्राप्त करा, जो पहली विजय उन्हें लाल सागर में मिली। And which is the picture of our, that corresponds to the cross, to the victory of the death, burial and resurrection of Christ. जो इस चीज को चित्रित करता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को, प्राणों को हमारे लिए दिया, क्रूस के ऊपर दिया और हमें उद्धार। With such a tremendous foundation under their feet, they began to walk further on to the goal that is set before them. इस अद्भुत नींव के आधार के ऊपर जो उनके पैरों के नीचे थी, उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया।
And we see that the Lord told Moses now to build the tabernacle, that the Lord would house himself, tabernacle himself in the midst of his people, and lead them on to the land of promise. और तब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि तू उस खेमे का निर्माण कर ताकि मैं उसमें निवास करूं और इस अपने लोगों की अगुवाई करूं. But we see that after some time, लेकिन हम देखते हैं कुछ समय के बाद it came to a place that they stopped going on. वो एक ऐसे स्थान में आ गए कि उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया. We see that very clearly in the life of the children of Israel. और इस्राएल के बच्चों के अंदर हम स्पष्ट रीति से देखते हैं उनके जीवन. We know that the tabernacle was constituted for the time of it was something temporary, it was transitory. और हम देखते हैं जो ये खेमे का निर्माण था ये एक अस्थायी रूप से था उस समय के अंदर. You know, the tabernacle in the midst of God's people signified one thing, and that is no settling but moving on. जो एक खेमा है वो उसके लोगों के बीच में एक चीज की तरफ संकेत करता है कि किसी ने भी एक स्थान के ऊपर स्थिर नहीं रहना, हमेशा के लिए रहना नहीं, बल्कि आगे बढ़ते चले जाना. You know, that's what the tabernacle really signifies. और यही उस खेमे की विशेषता है. The tabernacle tells it's something that is transitory. It's something that is to be, seen as temporal until we reach the desired end. और ये खेमा उस चीज को दर्शाता है कि ये कहीं पर भी एक जगह के ऊपर स्थायी रूप से नहीं रह सकता, बल्कि इसको आगे बढ़ते चले जाना है जब तक कि वो वाचा के देश में ना पहुंच जाए. It was so made that it could go on. और उसको इस प्रकार से बनाया गया कि उसको कभी भी उठा के उसको आगे 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 बढ़ाया जा सकता है. Amen. The tabernacle was so made that it could be put down in one place, and in no time it could be taken and they could move on. और खेमे को इस प्रकार से बनाया गया था कि उसको कहीं पर भी बगैर समय व्यर्थ करे लगाया जा सकता है और उसको निकाला जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है. So we see very clearly the tabernacle in the midst of God's people was the presence of the Lord, and that was transitory. It was something that was to take them on. It was not something to make them settle down in one place. और खेमे को हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के रूप में उन परमेश्वर के लोगों के बीच में, जो कि हमेशा के लिए नहीं थी बल्कि वो आगे बढ़ने वाली थी और अस्थायी रूप से थी. So that talked about the progression of his people. और ये इस चीज की तरफ संकेत करता है कि उसके लोगों के अंदर बढ़ोतरी या उन्नति. Now coming back again to the book of Numbers. और गिनती की पुस्तक के ऊपर जब just to see a few things again. और गिनती की पुस्तक के अंदर अगर हम कुछ चीजों को देखेंगे, there are many warnings, many things we can receive from the book of Numbers. और गिनती की पुस्तक से कई सावधानियां और चेतावनियां हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं. There are so many warnings that we can receive from this book. और कई चेतावनियों को हम इस पुस्तक से अपने जीवन We can also receive many encouragements from this book as well. और काफी उत्साह की चीजें भी हम इस पुस्तक से ले सकते हैं. One of the things that I was able to see was, और एक चीज जो मैंने देखी इस पुस्तक में, in the book of Numbers we read about the journeyings or the moving on of God's people. और इस पुस्तक के हम अंदर देखते हैं परमेश्वर की लोगों की यात्रा का विभिन्न कर्म. We see them journeying. They left this and they moved on. They left this and they moved on. They left this and they moved on. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की यात्राओं का विभिन्न तरीके से वर्णन करा गया है कि विभिन्न यात्राओं के अंदर, विभिन्न कक्षों के अंदर कैसे कैसे उन्होंने यात्रा करी. Now turn with me to the book of Numbers, to one place, only one particular chapter I want to turn you. The book of Numbers and chapter 33. गिनती की पुस्तक 33वां अध्याय. Numbers chapter 33. गिनती 33.
And it says here in this one chapter, these are the stages of the journeys of the Israelites by which they went out of the land of Egypt by their hosts under the leadership of Moses and Aaron. Verse 1. पहला वचन यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से इस्राएल मूसा और हारून की अगुवाई के अंदर मिस्र देश से बाहर निकले और पड़ाव डाले उन्होंने. You know, and one particular expression we read here, and they journeyed. और एक विशेष अभिव्यक्ति को हम यहाँ पर देखते हैं, और उन्होंने यात्रा करी. And they departed. और वो आगे बढ़े. And they journeyed. और उन्होंने यात्रा करी. 43 times that expression is used in one chapter. और इस एक अध्याय के अंदर 43 बार इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया. You know, so we see here that these people had a heart and a desire to journey, to move on as the presence of the Lord led them. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के अंदर एक हृदय था उस यात्रा के अंदर आगे बढ़ते चले जाना और एक स्थान से दूसरे स्थान पे कूच करते चले जाना. And the people of Israel journeyed. और इस्राएल के लोगों ने यात्रा करी. So they took up their journey. और उन्होंने यात्राओं का क्रम बनाए रखा. And they had a heart to move on as the Lord went before them. और जिस प्रकार से परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था वैसे ही परमेश्वर के लोग इस्राएल परमेश्वर का. Now what happened afterwards? लेकिन बाद में क्या हुआ? When they came to a place called Kadesh Barnea. और कादेश बर्निया. Listen very carefully. वो आए. When they came to a place called Kadesh Barnea, लेकिन जब वो कादेश बर्निया नामक एक स्थान में आए, which is the border to the promised land, और जो कि एक वाचा के देश की सीमा, something happened to these people. लेकिन कुछ उन लोगों के जीवन में हुआ. They stopped. वो थम गए, रुक गए. Listen very carefully. ध्यान से सुने. You know, when they came to the place called Kadesh Barnea, और जब वो कादेश बर्निया नामक स्थान में आए, you know, they stopped there. वो वहां पर रुक गए. And from there they said, we cannot enter into this land. और उस स्थान से उन्होंने बोला कि हम इस वाचा के देश के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते. And from there on, we do not read so much about their journeyings. और उस स्थान के बाद से हम उनकी यात्रा के विषय में ज्यादा नहीं पढ़ते. They stopped there. वो वहां पर रुक गए. And of course they went on in the wilderness, but it was not a journeying as far as God was concerned. और Listen carefully. ये एक बात है कि वो उस जंगल के अंदर ही घूमते रहे, लेकिन वो यात्रा नहीं कर रहे थे जैसे कि परमेश्वर से संबंधित है. You know, it was not an onward move as far as God was concerned. और उनके जीवन में आगे बढ़ने की वो यात्रा नहीं थी जहां तक कि परमेश्वर का संबंध है. Now it's very clear that the Lord was with them and led them despite their weaknesses, their failures, the troubles they gave to the Lord did go on with them because they had a heart to go on into the things of God. और जैसे हमने अभी सुना कि कितना स्पष्ट हो गया है, इसके बावजूद कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया, परमेश्वर को कष्ट दिए और विभिन्न उन्होंने तकलीफों का सामना करा, उनके स्वयं के जीवन दुर्बलताएं थी, लेकिन सारी चीजों को परमेश्वर ने सहा क्योंकि उनके भीतर एक हृदय था आगे बढ़ने के लिए. And we know that generation died in the wilderness, not having entered into the promise. और हम जानते हैं कि वो पीढ़ी उस जंगल के अंदर मर गई बगैर वाचा के देश में प्रवेश करने. Now that was not God's idea at all for them. और ये परमेश्वर का विचार उनके लिए नहीं था. But it was because of their own hearts. लेकिन ये इसलिए हुआ उनके हृदय की दशा के अनुसार. So the Lord was not in their death in the wilderness. It was not in His plan. परमेश्वर जंगल के अंदर उनकी मृत्यु के साथ नहीं था और ये परमेश्वर की योजना नहीं थी उनके लिए. So God's promise to be with them was as long as they have a heart to move
on in His purpose. परमेश्वर Listen का- carefully. परमेश्वर का वायदा और वाचा उनके लोगों के साथ तब तक थी जब तक कि उनके पास एक हृदय था आगे बढ़ने के लिए, You know, it was conditional. और ये एक शर्त के ऊपर आधारित The very purpose of the tabernacle in the midst of them, presenting Himself in the midst of them, was to this end, to take them on and on and on until they reach that ultimate unto which they have been called. और परमेश्वर ने उस खेमे को अपने लोगों के बीच में सिर्फ इसी उद्देश्य से लगाया था ताकि वो अपने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लगातार आगे बढ़ाता चला जाए। You know, when we turn to the book of Hebrews, और जब हम इब्रानियों की पुस्तक को देखते हैं, I said we will turn to that after a while. और जैसे मैंने कहा था कि कुछ समय के बाद हम पलटे, You know, when we turn to the book of Hebrews chapter 4, और हिब्रू की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय, we read here in chapter 3, और तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं in verse 18, 18वें वचन में, and to whom swear He that they should not enter into His rest, but unto them that believed not. और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्वास में प्रवेश ना कर पाओगे, क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी। So we see that, you know, these ones, they did not enter into their rest because they were unwilling to go on in Him. और हम देखते हैं इस पीढ़ी ने परमेश्वर के विश्राम के अंदर प्रवेश नहीं करा क्योंकि उनके अंदर वो इच्छा नहीं थी आगे बढ़ने की। And when we come to the book of Hebrews chapter 6, और इब्रानियों उसका 6ठा अध्याय, one thing the Hebrew The Lord God is for me, my heart finds hope. In His goodness forever I will trust. He will raise me in His timing. He will send me a word from His throne. The Lord is my keeper and my help. I will look to Him when I fall. None will care for me like this but the Lord. When I call, arise, O Lord, unloose Thy might. Arise, my defender. Arise, my light. Arise, O Lord, unloose Thy might. Arise, my defender. Arise, my light. The Lord will sustain me by His word. Of His faithfulness I will sing. To the